days live learning sessions, which we'll be discussing about that in a while. Okay, let's discuss in the start only so that we don't have to then later focus on that. So if you go to our website, you go to the courses section, you'll be able to see the 9 days live learning where I'll be teaching you all the 6 important concepts which will help you to understand the market in a much better way, and you can apply that during the live market and you can plan your few trades. I will be also taking out the same thing. I will be also executing the same setups which I'll be doing with all of you in the next 9 days. And I will show you the live backtesting data, that how that particular setups are be rewarding you. Okay. Now, why I'm also starting that particular 9-day live learning from 9th of June only? Why I'm not going from, let's say, 20th of June or post that 25th of June and continue till the month of July? The reason is very much clear that these next 10 to 15 days in the market are very, very crucial. So you all of you know that whenever there is a crucial time in the market, I always try to be there in touch with all of you in whatever ways possible. I will be suddenly get active on Telegram. I will be getting suddenly active on YouTube so that you people are not misguided and you are not planning any trades out of a FOMO, or you are not thinking in the opposite direction. Just like few of you might think कि market कितना ही गिरेगा, तो हर एक selling पे some of you might just go and start buying, but that is not the thing. You should not catch the falling knife, and vice versa. Some of you might think कि market अभी गिर रहा है तो और ज्यादा गिरेगा, so let me make all my position in the short. तो प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसा कभी नहीं होता. मार्केट ना कांस्टेंट गिर सकता है, ना मार्केट कांस्टेंट बढ़ सकता है. इट विल श्योरली टेक अ पॉज एंड देन इट विल ट्राई टू कंटिन्यू. Correct? So that is the thing which I wanted to spend the time with all of you, and I wanted to be there in the market so that I can help you out for that. So that is the reason we are starting that sessions from 9, 10, and every day you can see there is not a single day gap, because during all these days there is a high probability that market will give us either a temporary top, or market will give us a temporary bottom. If that happens, then we will be planning a positional trade also. Okay, so as per my time analysis, tomorrow is a most important day, and considering the confirmation of the time analysis, day after tomorrow is another important day. If that happens, then 9th and 10th of June will be a crucial one. So what better than to sit with you in the live market? And also this will be the last time we'll be taking this 9 days live learning. Why? Because from the month of July, the SEBI new guidelines will be applied कि आप लोग लाइव मार्केट में कोई काम नहीं कर सकते. आप 30 डेज का, आज की डेट से 30 डेज के पहले का चार्ट आप नहीं दिखा सकते. आपको 31st डे तक का एनालिसिस दे सकते हो. मतलब आज अगर 8 जून है तो मैं आपको 7th ऑफ मई का एनालिसिस दे सकता हूँ. वो चार्ट आपके सामने मैं शो कर सकता हूँ. तो अब ये सारी चीजें मार्केट में चेंज हो रही है. So we will also have to adapt with the market, with the SEBI, on all the guidelines, with the government. If that is the case, then all these beautiful sessions which we take, or which we are doing from past 2-3 years, everything will be stopped. If that will be stopped, then if this is the last month, then why not to sit all of us together and try to learn something in the live market and enjoy all my live commentary and everything what we do, until the next time again the SEBI comes and say, guys, you can again start taking your analysis in the live market, and everything comes back to the play, जिसकी probability बहुत कम है. Okay, so that is the reason I was like, चलो हमारे पास में 1 महीने का टाइम है, बहुत क्रूशल टाइम है. ऑल्सो जून सीजनलिटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है. मार्केट्स में बहुत सारे सीजनल चेंजेस भी होते हैं. सो रेनी सीजन भी स्टार्ट होता है. सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच कम अंडर द मार्केट्स ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम. So that is a major reason that we are starting again. Okay, so I think this is something I did in the last year, और लास्ट ईयर के बाद 6 महीने बाद अभी ये हो रहा है, और इस साल का ये आखिरी सेशन है. सो डू नॉट मिस इट आउट इफ यू आर इनटू द लर्निंग, एंड इफ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम माय साइड, एंड यू वांट टू बी इन टच विथ मी फॉर कांस्टेंट नेक्स्ट 10-15 days. Now
considering the market, what is happening in the global markets. The Dow Jones has closed at 695 points negative. Future is around 100 points negative. S&P is around 17 points. Nasdaq 198 point positive. So that is again coming as a mixed bag up here. Hang Seng has closed negative 233 points. Future is working around 110 points positive. This is giving me a clear indication that yes, we closed negative, but we are somewhere down the line trying to make a little bit of pause, or we can say a good small pullback on the bullish note. If that is the case, if how many of you have gone through my weekly analysis video on YouTube? कितने लोगों ने YouTube पे सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है for the weekly videos? And how many of you have gone through the video which I have shared on Thursday? Guys, Thursday was that kind of a day जहां पे हमको पहला साइन आना स्टार्ट हो गया था कि मैंने आपको स्लाइट हिंट भी दिया था कि जिस तरीके से नास्डैक, S&P एंड एवरीथिंग इज गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, वो किसी भी दिन गिरेगा अगले 1-2 दिन में, तो वो बड़ा कैंडल बना के ही गिरेगा. दैट वाज अ क्लियर हिंट, एंड दैट आई शॉट दैट वीडियो इन द अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock, and that video was out for all of you at the same time in next half an hour. Correct? So considering that, let's see what other opportunities are available for all of us to look for the sector wise and the global markets. And now where are we getting our pre-market open? So first of all, we'll consider the auto sector. Auto sector has been constantly on the flattish note. इसमें एक और डिप लगना है तो ये गैप फिलिंग वाला काम हो सकता है. अगर गैप फिलिंग तक आप आ रहे हो तो इट इज बेटर यू कमेंट टच द 23,999. अगर आप इस लाइन को क्लिक कर लेते हैं, टच टैप जो भी करना आप कर सकते हैं, इसको ब्रेक करना चाहते हैं 1-2-5 रुपए से, वो भी बेटर हो जाएगा. अगर आप कर लेते हो तो ऑटो का टाइम वाइज करेक्शन भी पूरा कंप्लीट होने वाले टाइम पे फिर ये आ जाएगा. देन ऑटो में भी हमको थोड़ा बहुत मूव देखने को मिलेगा. एनर्जी बहुत ब्यूटीफुली ऊपर की तरफ में अपने आप को होल्ड करके रखा है. सो एनर्जी में ये लो जब तक प्रोटेक्टेड है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर इसके नीचे हम टैप इन करते हैं तो इस वाले पूरी चाल का एक करेक्शन करेगा, जिसमें हम लोग इस गैप तक भी आ सकते हैं 37,543 के आसपास में. बट ये अगर हम बड़ा गैप डाउन खुलते हैं और उसका कंटिन्यूएशन आएगा तब एनर्जी में गिरेगा, क्योंकि एनर्जी इज अ सेक्टर जो पिछले 1-2 महीने से स्ट्रॉन्ग चल रहा है. तो स्ट्रॉन्ग को आपको ज्यादा गिराने के लिए ओवरऑल आपको मार्केट का ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा कि टेम्पररी अब निफ्टी हमारा बियरिश हो चुका है. मैं निफ्टी पे भी आऊंगा और आपको बताऊंगा कि निफ्टी का मेरा व्यू क्या है. ठीक है. आईटी में अभी टाइम वाइज करेक्शन और बचा है, मेरे हिसाब से 1 महीने का टाइम और बचा है. इस कंडीशन में ये हो सकता है कि आईटी अपना जो नया लो बनाए इसके नीचे जाके एक नया और लो बना ले. जैसे ये लो बना था, इसके नीचे नया लो बनाया, तो टाइम बचा ही है, इसको 1-1.5 महीना और काटना ही है. तो गिरते मार्केट में थोड़ा और गिर जाओ, थोड़ा करेक्शन और कंप्लीट कर दो. मैक्स मेरे हिसाब से हम 25,000 तक मैक्स गिर सकते हैं आईटी में, और उतना नहीं गिराना है मार्केट में आईटी को. तो आईटी विल अगेन ट्राई टू एक्सटेंड द टाइम वाइज करेक्शन. ठीक है. तो आप आईटी का व्यू मैंने आपको दे दिया कि आईटी को किस नजरिए से मैं देख रहा हूँ. लुकिंग एट द फार्मा में भी डिप जो आना है वो इसको रिट्रेस कर सकता है एट 23,370. तो यहाँ तक हम ध्यान देंगे. पीएसयू में मेरा पहले से व्यू बना हुआ है. जिस दिन प्राइस यहाँ से घूम के इस लेवल पे आया था कि पीएसयू को ज्यादा नीचे जाने की जगह नहीं है. पीएसयू में एक मूव 9163 का आना है. अब ये हो सकता है कि अगर मान लो किसी तरीके से हम थोड़ा और नीचे आ रहे हैं तो इस एरिया को रिटेस्ट कर लाए 7915 और 7808, इस एरिया को फिर से एक बार टच कर ले, थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले और फिर वापस निकाले. इंफ्रा साइडवेज है तो इस केस में ये थोड़ा 8993 तक आना चाहता है तो बिल्कुल आ सकता है. फिन निफ्टी में भी काम ये हो सकता है कि हम इस एरिया तक, फिन निफ्टी भी ज्यादा जगह नहीं है. एंड सेम गोस टू द बैंक निफ्टी के पास भी ज्यादा जगह नहीं है. 24,298, 300 यहाँ तक मैक्स आ सकता है. निफ्टी रियलिटी ऑलरेडी नहीं चला है, तो जो ज्यादा चला नहीं है तो वो ज्यादा गिरेगा क्यों. बट अब नीचे गैप है तो इसको हम थोड़ा कंसिडर कर सकते हैं कि 700 तक मैक्स गिरना चाहे तो गिर सकता है. कमोडिटी भी होल्ड ही है. थोड़ा स्ट्रॉन्ग मूव आपको देखने को मिला है कमोडिटी में. कमोडिटी गैप फिलअप करने के लिए आना चाहती है. अगर बहुत ही बड़ा गैप डाउन मिलता है हमको आज, लेट्स से सेंसेक्स 1500, 1600, 1700 पॉइंट नीचे प्री ओपन में ओपन होता है या ड्यूरिंग द मार्केट चला जाता है, तो फिर आप निफ्टी में थोड़ा 400 पॉइंट के आसपास में फॉल देखने को मिलेगा. तो फिर कमोडिटी अगर इसमें और टम्बल डाउन होना चाहती है तो 9750 तक का हमको एरिया कमोडिटी में दिखता है. कंजम्पशन भी 10803 तक आना चाहता है, बिल्कुल आ सकता है.
एफएमसीजी में थोड़ा सा गैप बचा है, तो आई थिंक ये गैप फिलअप हो जाएगा और गैप पे ही हमारा सपोर्ट भी आ रहा है 47,000 का, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। मेटल्स में भी मैंने ऑलरेडी वार्न किया था कि मेटल जिस तरीके से जा रहा है, एक बड़ी कैंडल अगर आपको देखने को मिलती है तभी आपको थोड़ा पैनिक मिलेगा। अगर वो बड़ी कैंडल देखने को नहीं मिलती है तो फिर आप ये समझ लो कि कोई दिक्कत नहीं है और मेटल अपना ठीक ठाक से हैंडल कर लेगा। तो मेटल में ये एरिया रिटेस्ट हो सकता है 12,777। मीडिया अभी अभी जस्ट चलना स्टार्ट किया ही था, तो अब मुझे पहला साइन कहीं आ रहा है कि चलो मीडिया में, ऑल्सो दैट इज कमिंग विद द वॉल्यूम, तो मीडिया में पहला साइन आना स्टार्ट किया। जो हम पिछले बार यहाँ वेट कर रहे थे ना, मैं इस एरिया को आपको बताया था मार्च 2025 में कि ये अकेला एरिया है जहाँ पे शायद पूरा मार्केट गिरता रहे बट मीडिया बाउंस लेगा। तो मीडिया ने बाउंस लिया, ये बाउंस लेके इसको 1926 तक आना चाहिए था, पर ये 1890 के आसपास में आया। अब ये भी आप अगर लो से कंसिडर करेंगे, दैट इज कमिंग अराउंड 32%। दैट इज नॉट अ स्मॉल मूव, दैट इज अ गुड मूव। बट क्या हुआ, उसके बाद उसका कंटिन्यूएशन नहीं आया और इसने इसके नीचे जाके थोड़ा सा और नीचे नया लो बनाया। उसके बाद अगर आप देखेंगे, अब वो जगह फिर से मुझे दिख रही है जहां पे ये उन्हीं एरियाज के आसपास से फिर से प्राइस पुशिंग कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, आने वाले हफ्ते में ये चेक करेंगे, आने वाले महीनों में भी ये चेक करेंगे कि हाउ द मीडिया रिएक्ट्स एट 1627। अगर ये संभाला तो फिर मीडिया वाले स्टॉक्स वापस से रडार में आना स्टार्ट होंगे। ठीक है, मिड कैप नहीं जा पा रहा है, मिड कैप फिर से अगर नीचे आता है ये को रिटेस्ट कर सकता है 59,000 के आसपास का। एंड सेम गुस्टो स्मॉल कैप, स्मॉल कैप थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू मिड कैप, तो स्मॉल कैप 17,480 17,600 यहाँ तक आ सकता है। जूनियर पूरा फ्लैट है, तो ये थोड़ा और करेक्शन दिखाने के लिए 68,000 तक आपको दिख सकता है। और ये ज्यादा चला भी नहीं तो ये ज्यादा गिरेगा भी नहीं, तो डू नॉट वरी एट ऑल। डॉलर इंडेक्स 100, इंडियन रुपी 94, ऑयल 96, डैक्स 24,759 वही के आसपास ही काम कर रहा है। नास्डैक ये मैंने जस्ट एनालिसिस दिया था और मैं बोला था जिस तरीके से स्टीप एंगल में ऊपर गया है, इसका बहुत ही लंबा स्टेप है, तो वर्टिकल रैली ऑलवेज एंड्स वर्टिकली, और इसने 4.5% का आपको फॉल जो यहाँ पे अभी दिखाया है। और अगर इसको कंटिन्यू करना है तो ये जब तक एरिया प्रोटेक्टेड है ना 28,551, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो नॉर्मल है। बट जैसे ये इस एरिया को क्रॉस करेगा नीचे, हो सकता है टेम्पररी आपको छोटा सा इसके नीचे आने के बाद में, एक सेकेंड, इसके नीचे आने के बाद में एक टेम्पररी आपको ऐसा फॉल दिखे, वापस प्राइस ऊपर पुश इन करो, फिर एकदम से तोड़ दे, क्योंकि ये तो वन डे का मूव है ना। तो अगर सेलर इसमें वापस से एग्जीक्यूशन देने वाले होंगे तो प्राइस वापस से पुल बैक लेगा। आपको कंसिडर कर, हो सकता है कि वो पुल बैक में प्राइस ऐसा आके प्रीवियस हाई के आसपास भी जाए और आपको बोलना चालू कर दे लोग कि अरे देखो मार्केट बुलिश हो गया, फिर टम्बल डाउन कर जाएगा। इफ दैट इज द केस देन ये लो टूटना जरूरी है, दैट इज एट 28,567 इन द नास्डैक। तो आप नास्डैक की तरफ में यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। गोइंग टू द डाउ जोन्स, डाउ जोन्स आल्सो लुकिंग एट अ वेरी गुड बुलिश स्टांस, तो 5248 के आसपास का एरिया है। इसने भी एक बड़ा सा बेयरिश एंगल्फिंग बनाया, तो लेट्स सी कैन वी एबल टू सी अनदर कंफर्मेशन कैंडल कमिंग इन द डाउ जोन्स और नॉट। बोवेस्पा ऑलरेडी सेलिंग में है, तो ये अपना स्ट्रक्चर ही कंप्लीट करेगा, यहाँ तक ही आना है इसको 164,500, तो यहाँ तक ही आ जाएगा। एसएनपी मैंने बोला था ये भी स्टीप लाइन है, बहुत ही तगड़ा स्टीप लाइन है, आप खुद ही देख सकते हैं। अगर मैं इसको आपको एंगल वाइज में दिखाऊं तो इट इज गिविंग मी अ एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो 45 डिग्री का स्लोप होना चाहिए, ऑलरेडी 60 ऑलरेडी वेरी हाई, तो इसका भी अंत वैसा ही होगा। तो आप देख सकते हैं जितने पिछले 7-8 दिन का जो मूव बनाया था सब कुछ एक कैंडल में खत्म हो चुका है। तो एसएनपी का भी सेम ही मूव है, पिछला स्विंग ये बनता है। तो अगर प्राइस इस वाले स्विंग को ब्रेक करती है और इसके नीचे सस्टेन करता है प्राइस, तो इट इज प्रीटी मच क्लियर कि फिर हम और सेम नास्डैक की तरह गिरना स्टार्ट करेंगे। कॉपर ठीक है, रसल में भी खराब कैंडल बनी है, हालांकि रसल बहुत ही स्ट्रांग है, ये कब से ऊपर चल रहा है। आप देख सकते हैं हमारा मार्केट 2024 में टॉप लगाया, ये इसने भी 25-24 के आसपास में टॉप लगाया, नीचे काम खत्म किया, पूरी रैली यहाँ से स्टार्ट कर दिया 2280 से, तब से पूरा बुलिश है, तो ये सुपर स्ट्रांग है। तो इस केस में वर्स्ट क्या हो सकता है, रसल इस एरिया को रिटेस्ट करने आ जाए जो पिछली बार छोड़ गया। व्हाट इज दैट एरिया, 2697। ठीक है, सो यू कैन लुक फॉर द रसल इन दैट। इंडिया विक्स 15 के आसपास में, इंडिया विक्स थोड़ा पुल बैक लेना चाहता है ड्यू टू द पैनिक एंड ऑल, वी कैन सी 20.32, दैट इज द एरिया व्हिच वी कैन सी। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट।
think it should be fine. Yeah. So we can get around 20.3 के आसपास का एरिया हमको देखने को मिल सकता है मैक्स पुल बैक के अंदर में. सो लुक फॉर दैट. अच्छा, ग्लोबल विक्स बढ़ गया है. ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल कैंडल बनी 21.55, 24.34 तक जा सकता है. गैप भी पेंडिंग है, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो थोड़ा और पैनिक मुझे दिखता है. ठीक है, अगर पैनिक नहीं दिखता है तो आप ये देखो कि ये ऐसा नीचे आएगा विक्स, ग्लोबल विक्स, और फिर यहां से मूव करेगा. अगर ये सिनेरियो बनता है ना, तो जो मैंने आपको नास्डैक में मूव बताया कि मार्केट में थोड़ा पुल बैक देखने को मिलेगा और फिर वापस से शॉर्ट करेगा बड़ा आदमी, वो मूव हमको देखने को मिल सकता है. ठीक है, कमिंग ओवरऑल टू द निक्केई एंड ऑल, जस्ट गिव मी अ मिनट. या निक्केई एंड निक्केल में भी फिलहाल ठीक है, ये भी आपको इस एरिया को रिटेस्ट करता हुआ मिल सकता है 63.482. हालांकि ये स्लो चल रहा है, प्रॉपर करेक्शन करता हुआ चल रहा है, तो 69,913 के आसपास में भी काम कर रहा है. गोल्ड फाइनल मूव में आ रहा है सेलिंग में नीचे. आई एम ऑलरेडी शॉर्टेड द गोल्ड. मैंने मॉर्निंग में गोल्ड वाले सारे लोगों को ट्रेड दिया है, सो इट इज गोइंग इन आवर फेवर एज ऑफ नाउ. एंड सिल्वर भी ठीक ही है, 10 ईयर यील्ड और ये भी सब कुछ फिलहाल ठीक ही दिख रहा है. नाउ वी विल क्विकली चेक हाउ द प्री ओपन मार्केट इज ओपनिंग अप हियर. लेट्स सी. ओके, निफ्टी इज अराउंड 300 पॉइंट्स नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव नहीं दिख रहा है मुझे. And as I told you, Sensex 1500 से 1600 पॉइंट के आसपास में गैप डाउन. You can clearly see that is the first tick is coming around that same range. Let's see, are we able to open below that 73,000 mark? So it's just a 9 o'clock and we have another 8 minutes. So again, I will quickly take you up here and I will now take you to the Nifty. Okay, this is a Nifty chart as of now, and Nifty has been holding my beautiful area of 23,150, 160 area. Okay, I will take to the Nifty later on. I will take you to the BTC prior to that. So BTC has been in a constantly short area. आप सबको पता ही है BTC का मेरा व्यू क्या था, and BTC beautifully respected the area of 81, 82, that area, make a false breakout on the higher area, and from that particular area it constant short. अभी भी जगह बची है सर. We can see that 56,000 area, max 53,000 area. That is what I am looking out for as of now. Okay, so BTC is showing me that particular kind of trade. So BTC अगर वापस से पुल बैक ले रहा है 65,000 तक ले सकता है, और वहां से अगर किसी प्रकार का सेलिंग आपको देखने को मिलता है, we can see the selling continuing down further from here. Okay, so BTC we have that particular setup, and now I'll take you to the Sensex so that you can also get to view of a Sensex. तो Sensex में सर ये एरिया प्रोटेक्ट हो जाना चाहिए आज. If we are protecting this particular, because this was the only initial push from the buyers, that is coming at 72,794. So let me see where is the Sensex. 73,990 चल रहा है, तो almost flat ही आ गया है. Okay, so that is okay. ये एरिया हमारा प्रोटेक्ट होना चाहिए. So if that is getting protected, nothing beautiful than that. And now I will take you to the Bank Nifty. Let me open another chart for you. Where is the Bank Nifty? Yeah. So if you see the Bank Nifty has been an absolute beauty, respecting my 53,570 level very beautifully. The gap has still not been filled. तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि ये गैप तक अपने पास में मैक्स जगह है, ये एरिया. ठीक है, यहां तक आता है, बहुत ही बढ़िया है. और बहुत ही वर्स्ट हो गया तो प्राइस टैप इन करने के लिए 51,500 तक आ सकता है. टैप इन करने के लिए, क्लोजिंग नहीं आना चाहिए, टैप करके वापस ऊपर आ जाए. इफ दैट इज द केस, ब्यूटीफुल. इफ नॉट, देन आई विल टेल यू कि ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल जगह है. 52,640, 650. आप इसको ड्यूरिंग द डे गिराइए, कल परसों गिराइए, कभी भी गिराइए. ठीक है, इफ दिस हैपेंस, नथिंग ब्यूटीफुल देन दैट. नाउ टेकिंग यू टू द निफ्टी. थोड़ा सा मैं कॉन्ट्रा बात करने वाला हूं, तो हो सकता है कि आप लोगों को ये चीजें अच्छी लगे या ना लगे, बट मेरे व्यू को समझना. मैं अक्सर वो काम करता हूं जो बाकी सारे लोग नहीं करते, एंड सेम गोस विद व्यू ऑल्सो, कि बाकी सब लोग अगर बियरिश है तो मेरा व्यू हमेशा आपको थोड़ा उल्टा ही मिलेगा, और मैं उसमें ही ज्यादा बिलीव करता हूँ. ओके, एंड आई डोंट नो बिलीव बोलना चाहिए या समहाउ माय एनालिसिस आल्सो कम इन दैट वे कि जो पब्लिक सोचती, मैं उस नजरिए से मार्केट को नहीं देख पाता हूँ.
नाउ अंडरस्टैंड कि ग्लोबल मार्केट में सेलिंग क्यों है, बिकॉज ऑफ एआई एंड ऑल, ये सब जो बबल था, जो मूव था, वो सब कुछ है। मेरा पहला सवाल ये कि क्या इंडिया के मार्केट ने उस रैली में उनके साथ में पार्टिसिपेट किया है? जो भी लोग थोड़ा ग्लोबल मार्केट से ताल्लुक रखते हैं वो समझ पाएंगे इस चीज को। जो लोग नहीं रखते, वो जो सिर्फ कैंडल्स को देखते, प्राइस को देखते, वो सुनिए बस, आप उसको नहीं समझ पाएंगे। बट मैं चाहता हूं कि आप उसकी तरफ में भी थोड़ा ध्यान दें, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू लुक एट द सेटअप चार्ट कॉल पुट, जो भी आप काम करें उसके अलावा। सो हमने पहले ही पार्टिसिपेशन नहीं दिया है, और हम अपना, अगर आप ग्लोबल मार्केट देखो, डाउ जोन्स एंड ऑल सब देखो, एवरीबडी इज मूविंग अप। अपना हाई बना के डाउ ये प्रीवियस हाई के ऊपर काम कर रहा है। उन्होंने उस रैली में पार्टिसिपेट किया, हम तो भैया नीचे ही है। अभी तो हमने 2024 का जो भी हाई लगाया था, जो हमने पकड़ा था, हम उसके भी नीचे ही काम कर रहे हैं। मेरा टाइम वाइज एनालिसिस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ठीक है। मैंने आपको 2026 का दिसंबर का समय दिया है कि सर 2026 के दिसंबर तक हमारा ये जो हमने जो करेक्शन करी थी 2024 से, वो 2 साल के आसपास में चलने वाली है। तो दिसंबर अगर मैं आपको लेके चलता हूँ, तो दिसंबर भी बस अभी आने ही वाला है। हम हार्डली 4-5 महीने दूर है अभी दिसंबर से। तो दिसंबर के आसपास से हमारा मूव जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा सवाल ये है कि अगर हमने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, हमने वो बबल वाले मूव में पुश ही नहीं किया है, देन हाउ आर वी एक्सपेक्टिंग कि हम बहुत ज्यादा गिर जाए? हाँ, ग्लोबल में सेलिंग आएगा तो ऑब्वियसली कि हमारे मार्केट में भी सेलिंग हमको देखने को मिलेगी, बट इट इज नॉट नेसेसरी ना कि वो ज्यादा गिरे तो हम भी ज्यादा गिरेंगे, ये मेरा मानना है। तो उनके चक्कर में अगर हम गिरने वाले हैं, तो सर हमारा स्ट्रक्चर ही ज्यादा गिरने का नहीं है। हम ऑलरेडी सेलिंग में बैठे हैं, हमारा टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उनके चक्कर में गैप डाउन खुले, हम इनिशियल 1-2 घंटा पहले नीचे का काम करें, एंड देन हमारा मार्केट सेकेंड हाफ में रिकवरी वाले मूड में आ जाए। तो अगर निफ्टी के चार्ट में लेट्स से वी गो टू दैट 23,157 एरिया ऑन द लोअर जोन, जो हमारा सपोर्ट है, इसको टेस्ट करिए, इसके थोड़ा नीचे भी जाए, ठीक है। अब इसके नीचे हमारे पास मल्टीपल सपोर्ट है। पहला सपोर्ट तो ये 23,000 के आसपास है, साइकोलॉजिकल नंबर। फिर उसके नीचे आओगे तो आप 50 पॉइंट नीचे ले लेना, 23,950। उसके आप नीचे आओगे तो 22,800, एंड फिर हमारा ये 22,700 एंड 22,570, ये हमारे बस मैक्स है, ये मैक्स मैक्स। और इसी चीज का एनालिसिस मैंने आपको वीकली वीडियो में भी दिया है कि गाइस, अगर इस एरिया के अंदर में काम कर रहे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस एरिया से हम मैक्सिमम गिरेंगे, कहां तक गिरेंगे? यहां तक बढ़ेंगे। ये मैंने थर्सडे को एनालिसिस देके रखा है। अगर आज कल परसों कभी प्राइस इस एरिया के आसपास आती है, तो my view is very much clear that I will be looking out for the buying opportunity in case there is a bullish candle formation. अगर कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन नहीं आता और यहाँ पे बेयरिश कैंडल बनती है, फिर बेयरिश कैंडल बन के नीचे जाता है, तो भैया मैं एक बार के लिए मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट यहाँ से गिरे 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 और सीधा 22, 21, 20 हजार पे आ जाए। इम्पॉसिबल। मार्केट आएगा, पुल बैक लेगा ही लेगा, फिर डिसीजन लेने का मौका देगा ही देगा, फिर और सेलिंग इंक्लूड हो जाएगी। करेक्ट। तो जब नाइफ गिर रहा हो तो एकदम से मत पकड़ो, हाथ कट सकता है। उसको गिर के जमीन पे सेटल डाउन होने तो फिर आप उसको पिक करिएगा। तो same setup, that is what I'll be working on in the Nifty also. Okay, so I hope the view is clear now and you will not be getting panic कि भैया मार्केट में बहुत ही बड़ी सेलिंग आ रही है, सब कुछ ऐसा कुछ काम हो रहा है। As of now, Nifty is around 280 points negative and Sensex around 800 points negative. ये भी छोटा नहीं है, ये भी बड़ा मूव है। हमारे सेंसेस के प्रीमियम बहुत ज्यादा स्पाइक हो जाएंगे। तो आई थिंक द फर्स्ट सेशन or at least first 50, 45, 50 minutes should be on a lighter note. And if you are planning any kind of a trade, that should be with a small quantity. Okay, so that is the view which is coming out as of now. Guys, give me a minute. Guys, I will be back by 9:10.
Just give me another 2 more minutes. I think I have got my session logged out from all other devices. So let me be ready on my main setup. Just give me a minute. Just give me another 2 minutes. I'll be back. Okay, guys. Now we are back. So, were you able to understand? जो भी मैंने आपको चीजें समझाई अभी समझ में आया आपको? Please let me know in the chat. Were you able to understand all the setup जो हमने डिस्कस किया? Okay. Now we will see how the markets are giving us that particular move, and then we will be planning our new phase of a trading. So we will add now everything to the watch list. Excuse me. So it's at 73,421. Okay. 73,421. They are opening up there. So the premium will be already spiked in 73,421. So we should be looking out for 73,000 put, and we should be looking out for in the
call side around 74,000. डिपेंड करता है कि अभी वो कितना प्रीमियम डीके करता है, बट वी विल टेक अ लिटिल लॉन्गर साइड so that you're not having any issue. And do not be in a hurry to plan any kind of a trade from the start only. Okay, we'll try to be little slower. So let's get ready. So how many of you have taken the put side position with all of you? Is there anybody who has taken the put side position with them? And coincidentally, they're opening with the gap down. Is there someone? Okay, that's good, yeah. Okay, guys, the markets have started and the premiums have been faltering beautifully, and the put is now at 350, a superb candle, an absolute candle where you should be looking out for booking up your profits in case if you have in the Sensex. Nothing beautiful than that. We are totally muted. I'm not at all excited with the way the markets have been opening, and just because I want to take a trade, I will just quickly go and try to punch any orders. Absolutely no. Today is not that day. Okay, the premiums are moving pretty fine. So where everybody was expecting a bloodbath in the markets and our Indian markets also, there is nothing like that. It's hardly a 1% fall. Beautiful. Let's see. Yes, now the call is also rising. So be little bit cautious. Let's wait. Let's see where do we have the next opportunity. Okay, the first candle looks like a doji candle, which can show you some sort of a reversal out there. Okay. What's happening with the call side premium? That's okay, from 800 all the way to that 400. 50% decay has been done. And the put has given a 150% rise. That's okay. No trades at all, guys. Absolutely no setup, just a premium decay. Can they cross that area? Let me check on a 1 minute time frame. Nope. Guys, it's a premium decay. Allow the market to spend another 15-20 more minutes in the market. Let the amateur traders try to punch their order here and there. ये टाइम ऐसा है जहां पे दोनों कॉल पुट डीके में जाएंगे. ठीक है, सो ऑलरेडी द 50% डीके हैज बीन डन ऑन द कॉल. थोड़ा सा काम और बचा है कॉल में, वो कंप्लीट होगा, उसके लिए थोड़ा पुट स्पाइक ले सकता है.
If in case you are planning to take any kind of a move in the put side here, please understand you have at least a stop loss at this current juncture, जिस केस में प्राइस और ज्यादा नीचे गिर सकता है, दैट इज अराउंड 100 पॉइंट्स. सो अगर आप यहाँ पे कोई भी पुट का ट्रेड ले रहे हैं, मेक श्योर दैट आपका टारगेट 100 से ज्यादा ही होना चाहिए. ठीक है, वरना 100 पॉइंट तक इजीली प्रीमियम डीके कर सकता है. And if you think that you have an area and a play to the call side trade, so call may we can see another 70 to 80 points more fall. जब तक 612 ना, अभी तो बहुत टाइम बचा है. Okay, so now we will see what's happening in the Nifty. Nifty is now trying to pushing the prices little upwards, but that is fine. That is fine. We are not that aggressive here. We'll allow the market to settle in, guys. So the Sensex at 73,500 and Nifty at 23,100. Okay. Let me see on a daily time frame what's going on with the Nifty. Nifty is below our line of that 23,155. That's okay. That is absolutely fine. Then they made a low of 2370. That's another good number. Let's check what's happening in the put. Are they again trying to increase the premium or just a decay? Same at the same level. Call और decay हो रहा है. And if you look at a put में हल्का सा स्पाइक आ रहा है. 344, 365. Will they be taking that move further? At least first 15 minutes we will have to be on a lighter note, and then we can start looking for a trade. So when everybody is looking for the put, it will be easy for me to look for the call side trade setup. Okay, so 74,000 is at 395. We are still a little far away from that. Let's look at 74,100. Can we get to see that? At 359. That's also a good premium. Guys, a small risk can be taken in the call side if they try to cross this base, because they have formed a base. Okay, so we can look for a quick trade above that if they try to break in that base. Let's see. Okay, will they be making that move? A little bit of a patience is required today.
The price is trying to move in. Guys, give me a minute. अरे नहीं, मैं तो भूल गया था, रखा रहा ठंडा हो गया। वो तो कैसा हो गया, मैं उसमें लगा ना। Okay, the movie is coming, guys. Okay, so now we'll be looking out for a buy. Just a minute, I think there is some issue. Some problem happening there. Okay, so I will quickly go here, try to buy one lot here and keep my position open. Okay, they are still trying to make that particular push. I would love to add one more lot here, considering the way they are trying to move here. Okay, I'm not going super aggressive because we still have a enough ample amount of time available. But I think we can get that initial push that is what required from the Nifty and बोलते से ही all. आ गया वो तो। Interesting. 327 27 327 आई।
हम्म। हम्म। अच्छा रहा निकाल दिया, अभी गैप फिल करेगा। हाँ नहीं ठीक है। 150 Let's see how the push will be coming up in the markets. हम्म। I would love to keep a stop loss at 370 for my safety. It's just a start of the day. We are just going pretty slow, very slow actually. चलो कॉल कॉल लेना हो तो ले सकते हो हैं। And we'll try to see how the markets are giving us a हाँ move. ट्रेड में हूँ मैं। So the markets are giving us higher areas, but that's a very slow move. That's a very slow move. So we have to be pretty slow while taking our entries out there. Let's see, can we get to play that? $422, that's a good thing. Keep on making that move. Now I will quickly go here. I will try to book my one lot. Okay, just give me a minute. I'll have to cancel this order. Yeah, I will now love to exit my one lot here, and remaining will try to hold down further up. Let's see, can they give us a more push? I will just put a trailing stop loss to this now at 400, and we'll try to trail little further upwards here. So my stop loss is now trailed. In case that hits, that's okay. If not, then we will try to exit much higher. Let's see. What's happening with the Nifty? Nifty is slowly trying to push in up. Okay. I will trail a stop loss further upwards now because we are getting that push. I would love to trail it here somewhere. 423 पे मैं trail करना चाहूंगा. And in case they can quickly give me that spike around that 450, 460 mark, I would love to quickly take out this particular position. Come on, can we get that? Come on, come on, come on. Please don't hit the stop loss. Allow us to be there in the trade. Let's see what happens.
That's the beauty of market, that we are still getting protected. If they can allow us to be there for another 10-15 more points, nothing beautiful than that. We just played the initial push then. Okay, the trailing stop loss is hit. That is absolutely fine. So the official first trade is done. Oh, look at that. It just hit our stop loss and now suddenly trying to move in up further. That's okay. Now the only problem is I cannot enter the running trade because the stop loss is not in my favor. Okay. So now, okay, we made 1140 on this. We bought at 927, 928, at 400, 393, 2 lots. And okay, a good 25-30 points move. That's okay. That's okay. The price has also started to falter now. So how many of you were there in the trade? How many of you have taken the trade? Yeah. Okay. Now let me quickly check on a daily time frame. We are at 163. That's okay. Just give me a minute. Okay. The prices are again back to the basics. Okay. Now here, let's see, can they take a support at this juncture or not? Okay. If they are able to take a support now, then it's fine. If not, then the price can tumble down more further. Okay. So what I will do is, I would love to take a small risk on a single lot here. Bought it, I think, at 405, 404. And I would love to keep a stop loss for it at 380. Guys, please understand, if you are taking the exact same trade which I am taking, then you will also have to keep the risk as I am keeping it. Okay. So if you're not comfortable taking that kind of risk, just avoid it, just observe and just try to see what I'm doing. It's a trading, not every trade can go in your favor. Now what I'm planning to do is, I have taken a trade based upon the assumption that the particular buyer, those who have tried to push in the market with a little bit of a volume up here, I think they will try to protect this area and will try to take a push from here. Based upon that, I have put my decent stop loss of 30-35 points, and I would love to handle that. Okay. If they try to protect this area, then there will be quick pullback coming up in the premium also. Otherwise, they will hit my stop loss. That's the only thing which I'm looking out for. अच्छा, stop loss also got hit. हालांकि price वही पे ही है, but due to the volatility, my stop loss got hit. Okay, I will wait for another candle close here. Okay, they are again trying to take that particular pullback. I will be again entering here. I will try to keep a stop loss at 379 this time. But the markets are volatile, so these kind of things will keep on happening. So you have to be ready for that. Okay, and you can clearly see the price has taken a particular pullback. हालांकि प्रीमियम में कुछ भी बढ़ोतरी हमको देखने को नहीं मिली. ठीक है. Then I think till 10 o'clock or till 10:30, the markets will be stuck in a range. Now you can see here,
that the Nifty has taken a bounce, trying to hold around this particular area. But look at the premiums. Okay, now they have made that sudden spike. I will be exiting my one lot once that position come in a profit, so that my previous loss has been covered. Come on. Can they cross the prices at around 415? Is that possible? Can they go all the way to that 415 or on the 420 mark quickly? $409, 11, come on, 17. I'm exiting my one lot. Remaining one lot I am holding. And for that, I will keep a stop loss here now at, I think, yeah, 385 should be the stop loss in the system. And let's see what happens. Okay, so my system stop loss also been applied. I think this should be a stop loss 3. अभी इसके नीचे प्राइस आ सकता है, but that will go in the time pass zone. Okay, we'll keep a stop loss at 395. And if I get around 600, 700 bucks on this, I would love to quickly exit this. Come on. Can we get to see that push? Okay, 28. Come on, come on, come on. Try to give me that push. One more push for 27, 29. Come on. Nope. For the better safety, I will just trail it rather than exiting. Trailing looks much better because ये और spike ले सकता है ऊपर में in case they wanna move. So I will just go with the previous candle low as a stop loss, and I would love to trail it. It's just a morning trade, guys, which we are doing. Let's see. Okay, the stop loss got hit, trailing stop loss, and that is giving me a loss of 57 rupees. That is fine. Okay, guys, so that means जो भी हमने प्लान किया था उसमें हमारा जो भी लॉस बना था, that is what we have recovered and ended flat. मैं और इसके ऊपर भी मूव एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ठीक है, that is fine. Now, just give me a minute. Okay, again a push is coming. The market is stuck. Now understand the problem. When they try to move above from that particular area with the volume, when they retested it, there should have been a formation of a green color candle with a good volume. So this candle is not good for me. This is not good for me. This is not good for me. This is still not a good for me because closing is still pending. तो हम इसके लिए wait करेंगे.
these will all create a selling pressure. हालांकि जब भी प्राइस नीचे आ रहा है, you can see the absolute missing in the volume. So that is giving me a little bit more confidence that yes, if I want to play that move on the higher areas, I can again re-enter at that particular zone. Let's see. Okay. Can they push in the prices upwards? On the higher areas, they will have to break that candle, previous candle high with a volume and with a good green solid candle. If that is happening, then yes, I would love to take that particular position there in the call once again. And I would again love to hold that particular trade for the higher areas. Okay, so the premium have started to make that particular move. Now let's see, will they be able to hold up further or not? Come on. Okay, so I am entering in the call at 433 once again. Just a single lot. I'm not adding much here. I'll be keeping a stop loss of previous thing at 400. Okay, so system stop loss has also been applied. I'm just waiting for them to break this shackle. If they try to break and hold above this, I would love to again add one more lot to that particular position. I'll be trailing up further upwards. Come on, Nifty. A slight off a volume could be seen, but not that a decent one. Sometimes you have to be there in the trade before the trade starts to move. And that is the only reason I am currently holding this trade, because if they want to make that quick move on the upside, they will not give us that better entry. So that's the reason I have taken that small risk on a single lot out there. Can they? Can they not? Okay, so we got our trailing, our not trailing, our stop loss hit. That's okay. The market is now stuck, so we will now take a rest. So how we will take a rest is the market, until as they're not crossing this particular area on the higher side, I'm not planning any kind of a call side position. And let's see how the price reacts around this particular buyer, because this is the buyer जिसने price को push in किया था. So if the price try to go below 23,189, then yes, we might have to shift our view from here. From call to the put side. As of now, nothing is happening, so I'm just purely waiting for that. And by that time the move is happening, let me quickly take you to the put side. Put is also fine. Slowly they try to decay it.
uh, let me see what was the last swing they made on a 5 minutes time frame. अभी भी बहुत टाइम है, उसको 240 या 221 टच करना पड़ेगा टू मेक दैट बिग मूव, अदरवाइज ये स्लो एंड स्टेडी धीरे धीरे ऊपर चलता रहेगा. Okay guys, that is giving me a clear hint that I should just stay away and just observe the call side trade in case they give me that. Okay, so as you'll be looking for the call in 74,100 above this 440 range. Okay, till that time we will be avoiding the call because we tried 2 times. One times it has given me a stop loss but recovered that particular loss. Second time they just strictly denied that we are not going up. Okay, so if they are denying it, that's okay, price will try to pushing down further. Now watch out for this. This was the buyer who punched in the market. Watch it here. This was the buyer who punched in the market on the higher areas. इसका confirmation यहाँ मिला था. If this particular buyer is not letting that price move, then there is something very interesting. He will run for the cover. Okay, let's see. Please do not be in a hurry to plan any trades today. When the move is based upon the news or the global sentiments, no technical, no indicator, nothing works. You have to just go with the price. And also it's better to थोड़ा सा pause लेना, wait करना और फिर entry करना. See, that buyer is again trying to punch in the price. That is something which we need to observe. By that time, looking at that particular red candle, everybody would be like, chalo, let's go and buy the put. But that's how the big player plays with us. अच्छा, अभी आप यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व करना है हम लोगों को, दैट दीज वर द इनिशियल बायर्स. ओके, जिसने मार्केट को पुश इन किया है. उसके व्हेन दे आर ट्राइंग टू शॉर्ट इट और ब्रिंग द प्राइसेस डाउन, दे आर कमिंग विद एब्सोल्युटली नो वॉल्यूम. व्हाट डज दिस इंडिकेट? हो सकता है कि ये जो सेलिंग आपको ये जो बड़ी कैंडल्स दिख रही है, सब कुछ एकदम लो वॉल्यूम पे आया, तो कोई भी बड़ी बुलिश कैंडल आ जाए तो सब कुछ वाइप आउट करके लेके जाएगा प्राइस. ठीक है, सो जस्ट आई एम वेटिंग फॉर वन गुड बुलिश कैंडल टू फॉर्म that will come with the volume, and in case they take out this 250 mark, nothing beautiful than that. I would just love to go and punch my order out there. Guys, that is a solid candle. If that happens, the bullish engulfing, interesting one then. The only problem is the volume missing up. So I just need a volume. आप candle कुछ भी बनाइए, but if you come up with the volume, I will respect that candle. Can you bring the volumes? Okay, the candle is good, but the volumes are absolutely bullshit. I'm just waiting again. I'm not at all in a hurry to make my positions.
I'm still waiting, still looking for that good call side opportunity. One good candle, and we can put our money on the table, and we can take a small risk, and we can try to hold it for longer targets. And by the time they are trying to do all this particular thing, now if you guys want to see where will be our next target coming up, how many of you are interested to see where our next target will be coming up? Do you want me to mark that exact target in the chats, please? Guys, the prize is about to fly. Should we mark the next target, guys? Should we start doing that? Just wait and watch for this. It is now ready to make that another move once again in the call side. Come on, can they bring in the volume? If they are not able to bring the volume, it will be very, very difficult. Guys, I'm ready to buy a single lot here. Okay. Come on. So the next target will be, where is that price tool? From this particular high to this, we'll try to mark and keep it as it is above this. It should be around 23,300, and above that we have a super trend also. That is absolutely fine. Okay, so watch out for that. This one. Watch out for the trade, guys. Come on. Can they keep on moving it up? Slowly, slowly, the price is going in our favor. The only factor which is missing is the volume, guys. So that is the only reason I'm not increasing my quantity. I'm just letting it run. So in the seller's market, we are looking for a buying trade. Come on. Can we get to see that? Yeah. Okay. Keep on making that move. Where's the premium working? Still under that zone only.
I still wanted to see a much bigger move, but somehow we are not getting that bigger move also. Come on, come on, come on. For this particular position, guys, I will put a stop loss at 420 in the system so that I don't have to worry about my position, how the position is running. We'll just keep it running and we will see how long they can make that particular move. Okay. You can see the sell stop loss has been posted up here. मैं थोड़ा stop loss और ऊपर ट्रेल करूंगा अभी at around this juncture 425. That should be my ideal stop loss. I think we bought it at 435 and 10 rupees का stop loss है बस, and बाकी पोजीशन का जो प्रॉफिट चल रहा है उसको मैं छोड़ रहा हूं to make much bigger profit from there. In case if the market tries to give me that move, I would love to take that. And you will have to give market a space. अब प्रीमियम को स्पेस देना पड़ेगा मूव होने के लिए, तो मैंने 30-35 रुपए का स्पेस दिया है. इफ यू कीप इमीडिएट स्टॉप लॉस थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा. ओके, लेट्स लुक एट द निफ्टी. It is taking a retest at the breakout area. Let's see, can they sustain it there or not? बहुत ही स्लो मूव है बेटा. The move is pretty slow. The only thing that can save you is the trailing stop loss. Targets can be anything, guys. The only thing which is under my control is my stop loss, so I'm managing that. बेटा. Come on. I just need a one good bullish candle which is coming up with the volume. As of now, nothing has come. That's why I'm not increasing my quantity. I'm just going with the flow. Come on. Super laggard move. बेटा. कुचू. After this particular trade, we will take a small break, guys. You can have your breakfast and all. And then we will again back. Let's see how the market moves. Guys, if you think the market has made a new high today, previous high के ऊपर चले गए हैं, we are now super bullish. Absolutely no. We are going up, but there is no volume at all. बिल्कुल भी volume नहीं है market में. And we got our stop loss hit. Okay. So that is giving me a clear hint कि प्रणव अब तो बहुत ही time pass हो रहा है. After the breakout again got filled. And after that failed breakout again they are trying to push the prices down. इसका मतलब अभी और डीके बचा है. ठीक है. So if again there is a ample amount of time available with us, let's
Utilize this time in break, and we'll be staying away from the market for a time being, and then we will see how the market reacts. Okay. Chalo guys, we'll take a small break quickly and we'll be back by then. uh, it's around 10:05. We will take a break till 10:25. Okay, we'll be back by 10:20. Don't exit the webinar. There is a possibility that you will not be able to again rejoin, so please make sure that you are not exiting the webinar and just be there. Okay. There is no put side setup, guys. If you want me to show you that put, what's happening in the put, it's 312. अभी इसका और समय है guys. एक 250 300 के नीचे तो आना ही है, हालांकि 300 के नीचे आ चुका है, थोड़ा भी और काम बचा है. हम शॉर्ट्स क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ. वी विल प्लान अवर शॉर्ट वंस दिस बायर, जो ये बायर था ना, ये बायर, इसकी जब लो के नीचे प्राइस ट्रेड करना स्टार्ट कर जाए, तब तब हम थोड़ा शॉर्ट के लिए सोचेंगे. मैं आपको जब भी बता रहा हूँ, तो तब तक हो सकता है कि जब भी डिप मिले मार्केट थोड़ा पुश इन करे, थोड़ा और पुश इन करे. इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग. दैट्स व्हाई आई वुड लव टू जस्ट ईदर प्लान अ लॉन्ग साइड ट्रेड, और मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बिकॉज दिस बायर हैज पुट इन द मनी इन द मार्केट इन द मॉर्निंग, सो आई एम जस्ट गोइंग विथ हिम. दैट्स इट. ओके. चलो गाइस, आई विल सी यू एट 10:25. लेट्स सी व्हाट हैपेंस टिल दैट टाइम. पुच्चू हम्म हाँ पूरी मम्मा 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 को दियो मम्मा कितना ये दवाई लेके घूम रही बिचुआ ये दवाई लेके घूम रहा है बिच्चू
डेट होती है 26/5 तक, 5 नवंबर तक हम जाते हैं। लगा लो उसमें कुछ है नहीं। वो बाहर की है ना, अच्छा, क्या कर रही है? कुछ खाना है आपको? हाँ है ना वो। ये किसका है?
Hmm. Okay, let's get started. So, what's the case with the market now? Markets are not giving us any kind of a move. Yeah, markets have been stuck in a range, and that is what we were able to capture in last 30-35 minutes. The markets will not be giving us any kind of a move in the first half. Okay. Now, in case if the markets are planning to take that particular reversal, okay, now let's see, they try to push in the market for the first time, reject kar diya gaya. Second time push kiya gaya, again reject kar diya gaya. But this time if the markets try to falter down from this particular area, we might see a bigger selling coming up in the market. Okay, that is the next immediate sign which is coming from the market. Just give me a minute. I will try to bring that. Uh, is that possible? No.
Okay. Okay. Now, uh, yeah. So, if you are someone who thinks why the market has formed a base at this particular area, on the Thursday we made a specific move, which I will try to show you, because of which the market has given us you that exact move which we are able to see today. Okay. So, what is that move? So, if you see here, the market was able to come to this particular area 294 and all this particular zone, but before that market has formed a typical basing out area on the higher area. So if you see here on this particular note, if you just try to go and punch in the prices from this particular swing to this particular swing, and if you just take out and try to push in the prices lower to this particular area, you'll be able to see the market has formed an exact base today at 23204. Guys, this is not the only point which I'm trying to show you here. We will, I will explain you, I will teach you this in a much better way in the 9 days live learning. Don't worry about that. We'll be discussing out there how to mark, why to mark, when to mark. Okay. Now, this is the exact point where the first initial buyer has also pushed in. You can see the volume up there at 921. This is an exact area. उसी कैंडल का अगर आप यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ स्ट्रेट, एग्जैक्ट उसी एरिया के ऊपर में आके प्राइस ने सस्टेन किया एंड दिस एरिया हैज बीन रीटेस्टेड एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई एम अगेन and again looking at the prices at the higher area. I'm not looking for a put side trade. आज हमने मॉर्निंग में जो भी ट्रेड लिया है, जितना भी रिस्क लिया, एवरीथिंग हैज बीन डन ऑन द कॉल साइड. जो भी हमने पहले ट्रेड में प्रॉफिट बनाया उसको ही हम बार बार रिस्क पे डाल रहे हैं और उसी पे कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं. स्टिल वी आर in 160 rupees profit as of now. Okay, so nothing has been given a dent from the capital. Now once again if they try to push in the market on the higher areas, I will be again looking it at as a buying opportunity for me only. There is no way that I can go and just plan the short. The only problem which is coming here is the volume. Okay, the only problem is the volume, but yes, volume will eventually come. That is not a problem. The only problem is हमने जो ये सेशन लिया था लास्ट, ये आपको सेशन याद होगा, ये जो हम सेलिंग पकड़ने वाले थे, कहीं आज वैसा ना हो जाए कि हम इस कैंडल के बाद इस कैंडल का क्लोजिंग का वेट करो, क्लोजिंग में ही पूरा 150 पॉइंट का मूव आ गया. दैट इज द प्रॉब्लम टुडे. एंड उसी कंसिडरेशन को मैं रखते हुए अपने प्राइसेस को यहाँ पे बार बार जब भी प्राइस ऊपर में आ रहा है, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अगेन एंटर देयर. अरे यार, okay, yes, the prices have started to move again at 450. I will again go and just punch one lot here because again the prices are trying to move in up there. This is how you have to play, guys. You have to keep your risk small. I cannot go with a big quantity. The reason being we are not getting a decent volume what is being required at this current juncture. But once we get that volume, I would love to add one or two more lots into that. Okay, can they bring in the volume? If they can bring in the volume, guys, trust me, we can get a very good move. And we were looking for this particular move to get complete first. So there is a possibility that we might get the target getting hit at 300 mark also. I'm talking about this particular move. Okay, यहाँ तक price आना चाहिए. And above that we have a VWAP, super trend also, that is also fine. Okay, so let's see.
one good push and a single candle, we can get the target getting hit. Targets are totally open. We can look for, I think we can look for the opening price at this current juncture because ये हमारे पास में पहला latest swing है. Anything above that 500 plus area, we should look out for that. उसके बाद देखते हैं और कितना हम उसको ट्रेल कर पाएंगे. When I apply that same concept here, so the price would love to go to that 507 mark. Okay, that will try to just quickly go to that 507 mark. Come on, can we get to see that push? Now I'm going to the system and applying my stop loss. I'm just putting my stop loss at 425. You can see the stop loss has been applied in the system. I'm just waiting for them to give me that particular move. Why you are keeping this much big stop loss? Pure reason is the market is little volatile. We have to give it little space. That's why I'm keeping a little bigger stop loss. Otherwise, अगर मार्केट बढ़िया होता ट्रेंडिंग होता तो मैं स्टॉप लॉस यहीं पे ट्रेल कर लेता 440 के आसपास और हम इसको चलने देते. And I would be interested to book my profit at 507 mark at least, and anything above that will be a discount extra. Okay, now guys, this is a candle which is the first candle can be seen here जिसके अंदर में वॉल्यूम हल्का सा आया है as compared to the previous, but candle is absolutely bullshit. बिल्कुल भी बॉडी नहीं है कैंडल में. I need a good body. Okay, so if they can bring in the next candle, let's see. Otherwise, we'll try to hold it up. This is a pain which we are able to see in the markets. And there is no other way we can avoid this. We will have to go through that. So whenever there is not a clear confirmation, always try to go with a small quantity. And do not change the quantity size again and again and again. कि मैं इस बार ट्रेड लूंगा तो उसमें मैं फिर से थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा लेता हूं and then I will try to recover that previous loss. If that trade has to give you money, then that trade will have to recover your losses. You don't have to increase the quantity at all. Come on. You can again see they are taking such a longer time, but the premium is still holding up. So we are there in the trade. That's why I told you, rather than discussing about the target, let's just trail it
एंड ट्रेल करके होल्ड करते हैं, टारगेट कितना भी जा सकता है प्राइस इफ दे वांट टू मेक दैट रिवर्स. Still it is at 449. Let's see what's happening in the future. Currently they are again holding above this particular zone, but they are not able to clear this range. They tried to move above that, but somewhere down the line they were trying to again resisted that particular area. Okay. Let's see. So there is another observation which can help you out. That is, watch out for this. This was a high made at around 9:45. Then the new high was made at 10 o'clock. Then the new high was made at 10:30. Maybe by 11 o'clock we might hit our target. You never know. Yeah, the premiums have given a slight push to that 470. Yep, we are coming to that 480. Come on, can we get to see a move further? As I'm trailing the stop loss on the higher areas now, all the way to इसके नीचे आएगा, फिर से टम्बल डाउन होना स्टार्ट करेगा. आई थिंक 434-35 शुड बी द स्टॉप लॉस. मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया है. Come on, we have another last push pending all the way to the 507 mark. Can we get to see that? Why are you not adding one more lot? I have just explained that why I'm not adding that one more lot. That is pure reason. What is the stop loss in this trade? Already been applied to the system, man. You can see that. Why I'm not adding a quantity here? Because I'm not able to see a solid candle with the volume taking out this particular area. अगर ऐसी कोई सॉलिड कैंडल यहाँ बन जाती और बढ़िया वॉल्यूम के साथ में आ जाता, वॉल्यूम भी बहुत मिनिमल है, तो मैं इसमें एक और लॉट कंफर्टेबली ऐड कर सकता था विद द स्टॉप लॉस ऑफ द पर्टिकुलर कैंडल लो. But that is not coming today. That's why I'm just keeping myself on a little lighter note and just trying to be there in the trade without risking much of my capital. Because if the market wanna reverse in the second half, they can do that. And if that happens, I should have enough capital to again re-enter in that. Come on. Please don't hit the stop loss again. Again फिर वो boring move start हो जाएगा.
Very near to our trailing stop loss now. And it got triggered. Okay. That's the way the market is moving. We can't do much. A comfortable, smooth rally is not coming. That is fine. You can see what's happening in the future again. Again, that is a big red candle, but that is again with a no volume at all. So some of you might look at that as a bearish engulfing candle, and you might see a big Marubozu, bearish Marubozu coming up there, but that is okay. That is a candle, but there is no volume. It's just a balloon with filled with an air. That's it. Let's see. It's just 10:45. So they are forming a typical pattern. Let's say we'll draw a line at 11 o'clock. Let's see at 11 o'clock, are we able to see a new high above this? Okay, let's see. Someone will have to surrender this market. Either bears will have to surrender or the bulls. That we will see. But without that surrendering item, nothing will be happen. एक तो बुल सरेंडर कर जाएंगे या तो फिर बियर्स को सरेंडर करना पड़ेगा. And that will be the right time for us to again re-enter. Till that time, we will wait. So some of you might think that we have taken 2, 3, or 4 trades, let's say, in the same direction, in the same call, again and again. So should we consider this as a trade? So I will tell you how I consider a trade. Let's say इस जगह से मैंने positions बनाया and I was looking out for this particular area to get filled. आज चलो बहुत टाइम ले रहा है, 1 घंटा प्लस हो गया, 10, 15, 20 रुपए का ही मूव आ पाया है, उससे ज्यादा मूव नहीं आ पाया है. सो वंस I am planning for a trade from this particular area to this particular target, I consider this as my trade 1. Then in second trade, I might either see a trend continuation or a trend reversal. And then in the third trade, I might see again a trend continuation or a trend reversal. That way, I consider my 3 trades, and that's how I keep on managing my positions accordingly. Okay, it's just not like कि मैंने 3 बार order punch किया तो that is my 3 trades. That I don't do that. That you should do on a starting level. When जब आप beginner level पे है, तब आप लोगों ने सिर्फ 3 trades को ही punch करना चाहिए और maximum 5 trades, उससे ऊपर आपके trades नहीं होने चाहिए. And not only that, as you can see, इतना सब करने के बाद कितना ट्रेड लिया हमने? Here we are able to see कितना 3 कैंसल है ना. So I think we have gone with a 15 ट्रेड्स, मतलब 7 ट्रेड्स हुए हमारे, प्लस माइनस करके, बाय सेल करके. करेक्ट. 1 लॉट अगेन बाय सेल, ये तो सब एक ही जगह पे हुआ है. करेक्ट. तो ये सब करने के बाद भी we are still in just 160 rupees loss. So the risk to reward needs to be manageable. वरना हो सकता है कि आप में से कई लोग भी होंगे जो मेरे साथ में सेम ट्रेड लिए बट आपका लॉस मुझसे ज्यादा होगा. There is a possibility. If that is the case, then
आपको तो थोड़ा सा और समझदारी से काम करना है. यू विल हैव टू लर्न फर्स्ट. देखो अभी वो फिर से ऊपर जा रहा है, बट दिस टाइम अगेन एंटरिंग देयर मेक्स नो सेंस टू मी. सी दिस वाज एन अ सॉलिड कैंडल. मैं ऐसे कैंडल्स को जब ब्रेकआउट होता है, गिव अ इमेंस रिस्पेक्ट टू दैट. But why I'm today not giving the respect is the volume. You can see the absolute missing volume. इस कैंडल पे वॉल्यूम ही नहीं आ पा रहा है. अदरवाइज अगर मुझे ब्रेकआउट के आसपास में ऐसा कोई कैंडल मिलता है, मैं उसको बिल्कुल मिस नहीं करता हूं. लेट्स सी, कुछ ना कुछ मार्केट जरूर बनाएगा. डोंट वरी, मार्केट विल श्योरली मेक समथिंग. Till what time we have a webinar today? Guys, our webinar will be there till 12:30. I will be there with you all till 12:30. And before winding it off, don't worry, I will give you my point of view also, how I'm looking at the markets. ठीक है, अभी ऊपर जाएगा तो जाएगा, इसको देखेंगे हम लोग. ये चलता रहेगा ट्रेड. एंट्री अगेन एंड अगेन डजंट मेक सेंस टू मी. ठीक है, इन केस इफ आई गेट अ डिप तो मैं उस डिप को थोड़ा कंसीडर करूंगा. बट अभी एक्चुअली डिप भी नहीं आना चाहिए. डिप आएगा तो सेलिंग में प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाएगा. तो अभी आप देखो, ये ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ से चल रही है. ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दूंगा, बाकी सब मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से. ठीक है, let's say if the trend line is getting broken down again here, ठीक है, so there is a very high chance that we can see a bearish candle forming all the way from up there to this particular low. There is a possibility. एक ऐसा मुझे एक पॉसिबिलिटी दिख रहा है, जो कुछ ऐसा कुछ बनता हुआ हमको मिलेगा. अब उसका रीजन क्या है? So these were the bulls, those who pushed the market upwards. बहुत कोशिश किया, हर बाय डिप पे बाय सब किया. एंड दिस वाज अ लेटेस्ट कैंडल जिसके ऊपर में बुल्स ने फिर से अपना प्रेशर लाया, बट पता नहीं वो क्लोजिंग अच्छे से नहीं कर पाए. जहां पे प्राइस ओपन किया था वो था एरिया 68 का, और क्लोजिंग किया उन्होंने 58 पे, सॉरी 71 पे. तो सिर्फ ₹2 ₹2.5 ऊपर ले जा पाए, उससे ज्यादा प्राइस ऊपर लेके वो नहीं जा पाए. और उसके बाद ये हुआ कि जो सेलिंग वाली कैंडल बनी दैट वाज अ बिग वन. हालांकि उसमें सेलिंग का वॉल्यूम नहीं था. बट अगर मैं इन दोनों प्राइजेस का एवरेज ले लूं, लेट्स से यहाँ पे पहला पुश आया है और इस कैंडल पे क्लोजिंग के आसपास में यहाँ हमारा पुश आया है. सो इसका मिड पॉइंट 23,239 आता है. ठीक है, तो जिस भी आदमी ने यहाँ पे और ये यहाँ पे बाय किया है, लेट्स से दे बोथ आर द सेम पार्टी and that both operator is buying around this range and this range, तो उसका एवरेज मिड में यहाँ आ रहा है. once the price starts to go below their average, the panic will start to come. इसलिए इस एरिया पे डॉट प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है. so what I will do here is I will just draw a one more line from this particular base, और इसको हम कर देंगे डैश लाइन. ठीक है, once the price starts to come below this, और उसके नीचे हमारा ट्रेंड लाइन है. अगर ट्रेंड लाइन टूटता है, ये एरिया टूटता है और यहाँ पे एक बियरिश कैंडल बनती है जो वॉल्यूम के साथ में आती है. मैं 2 कैंडल्स बनाऊंगा यहाँ पे. ठीक है, ऐसे ये इसको ब्रेक किया एंड देयर इज अगेन वन मोर कैंडल जो वॉल्यूम के साथ आई, बट उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी लेट्स से वो इस तरीके से बनती है. दिस विल एक्सिलरेट द सेलिंग इन द मार्केट. ठीक है, फिर हम उसका टारगेट अगर ड्रॉ करेंगे तो तब की तब देखेंगे, जब सेलिंग आएगा तब देखेंगे. दैट इज द सेकेंडरी आइटम. बट आपको उसमें भी एक बढ़िया सेलिंग देखने को मिलेगा.
ओके, और ये रेंज कितना बना है इसको भी देख लेते हैं. 46. So it will try to bring the price to 118 also. ठीक है, तो ये सेलिंग तो सर फिर बड़ा आएगा. ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर इसका पहला साइन कहां मिलेगा. The first sign you will be able to see when the price is not able to take out this high, max, let's say 11:10 max. 11:10 तक इसको ये प्रीवियस जो स्विंग हाई है वो काट लेना. अगर वो नहीं काटता है तो उसमें हमको पहला साइन देखने को मिलेगा कि यस द मार्केट इज नाउ not having that kind of a strength to make that particular move happen. So we have another just 15 more minutes to witness that happening. And if that happens, I should be ready with the put also. So what I will do here is, ये तो ठीक है, but मुझे put के लिए भी ready रहना जरूरी है. तो पुट ने अभी क्या काम किया है कि पुट ने अपना मूव जो बनाया था उसको फिलहाल रिस्पेक्ट तो कर रहा है. ओके, बट इसके पास बहुत ही बड़ा एरिया बचा है. द सेलिंग इज आल्सो वेरी स्लो. So somewhere down the line what they will do is they will try to punch in the quick move. Okay, we'll try to keep an eye on this because that is also failed one, so I'll keep it like this. And ठीक है, देखते हैं. This is a 1 minute chart. I would love to keep it a 3 minutes chart. So the candles are very minimal. Okay, there is a slight push which is coming, and this was a range. They tried to break on the lower area, and let's see, can they cross that 303 mark? Yep. Chalo. So we are ready for the contra trade also in case they give us. And please understand, if it is coming with the volume, if that bearish candle is coming with the volume, everything will be getting changed. Because now it's almost half day, and if today they really want to make that particular move happen around that 12 o'clock or that post 12 o'clock, एक पार्टी को सरेंडर तो करना पड़ेगा. Because it's in a option selling as of now, so option sellers are making money. Call and put both are getting decayed slowly. So एक तो पुट वाला आदमी सरेंडर कर जाएगा या तो कॉल शॉर्ट आदमी सरेंडर करेगा. Let's see. Guys, next 13 more minutes to get that clear confirmation. A very important 13 more minutes. Are you guys able to understand whatever we are getting here? In the chats, please. आप लोगों को समझ में आ रहा है जो भी मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ? I know it's a difficult market यार, it's a difficult market, but that is the beauty ना. Difficult market हर आदमी की बस का नहीं होता है. And as you know me pretty well, I love difficult market. उसका जो मुझे डिकोडिंग करने में जो मजा आता है ना, वो मुझे बाकी कहीं मजा नहीं आता. That's why. इजी मार्केट हो तो अभी तो हमारा ट्रेड खत्म भी हो चुका. We would have been sitting with 100-150 points profit. That is the beauty. Can we short Bitcoin? बिटकॉइन में भी शॉर्टिंग का मौका मिलेगा आपको, but not as of now. Again, you can see the call premiums, they are again rising. But वही बात है, हम कितने बार एंट्री लेंगे. We have already done that 2-3 times. गाइस, ये तो 11 बजे के आसपास नया हाई बनाने जा रहा है प्राइस.
लेट्स से यहाँ पे कहीं हाई बनाने जाता है तो यही जो कैंडल बना रही है ना, इसी के लो पे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगले 30-40 सेकंड्स में अगर क्लोज कहीं करता है, देखेंगे कि 11 बजने को टाइम आने वाला है बस। सो इफ दे कैन डू दैट यहाँ पे कहीं, तो फिर हम देखेंगे, इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट टारगेट्स आर वेरी स्लो। 300 के आसपास का 1:1 भी नहीं आ रहा है, 1:4 आ रहा है, 1:1.5। ठीक है, देख सकते हैं, बिकॉज आई थिंक एक झटका कॉल में भी आएगा, एक पुश आएगा, थोड़ा एक रिस्क में लूंगा। लेट्स सी वेयर दे क्लोज इन नेक्स्ट 5 seconds. 2, 1 and it's 11 o'clock guys, we are getting almost close to that high. ठीक है, this was formed at 10:39, so हमारे पास में 8-9 मिनट और है। ठीक है, देखते हैं। अभी 11 AM वाली जो कैंडल हमने वर्टिकल लाइन बनाया था, अगर ये इस हाई के ऊपर क्रॉस करती है then we can look into that. Volumes are still missing in this green color candle. ठीक है, तो इफ यू थिंक कि भैया बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम है, कुछ भी वॉल्यूम नहीं है। वही प्रॉब्लम है। या आई गॉट इट अक्षय, आई गॉट इट। लेट्स सी, इट्स 11 o'clock candle. ऑन अ 1 minute टाइम फ्रेम में तो पूरा म्यूटेड है। हमने यहाँ पे भी एंट्री लिया, हमने ये भी पुश लिया, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर से उसी एरिया पे बार 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 बार। Come on, Nifty. Are you able to form something? One good candle with the volume is all we need. Absolutely dried up volume today. Which direction are you favoring? I am favoring as of now in the long side. मैं ऊपर का ही मूव देख रहा हूँ, बट आई हैव केप्ट माई बैकअप रेडी इन केस अगर मार्केट एकदम ट्रैप करता है तो ये इसी पैटर्न में ही गिरेगा। तो इसमें पुट में एक्चुअली और बड़ा पैसा बनेगा, बिकॉज ये सब सरेंडर वाला मूव रहेगा। एवरीबडी विल ट्राई टू सरेंडर इट, और ये मैं इसलिए सोच पाया बिकॉज आई कैन सी द वॉल्यूम्स आर एब्सोल्युटली मिसिंग। बुल्स आर नॉट एबल टू कम अप विद द वॉल्यूम। Let's see, let's see.
Anyways, we are just sitting. We are not in any positions as of now. Okay, जब तक ये हो रहा है, let me see. Can we get any kind of a premium setups in the call? Nope. Somebody will have to surrender. देखो जब सरेंडर होता है ना, तो आप दो तरीके का ट्रेड ले सकते हो. पहला तो आप सिंपल ये काम कर सकते हो कि जैसे सरेंडर हो रहा है उसके पहले ही आप पोजीशन में बैठे हो और आपके साथ में सरेंडर हो गया. या दूसरी चाल आप एक सरेंडर होने के आपको पता चला सरेंडर हो गया, जब भी नेक्स्ट पुल बैक आए आप उसमें एंट्री लिए और फिर आपने यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना पैसा बनाया और आप मार्केट से बाहर हो गए. सिंपल. Guys, now the trend line is slowly shifting where, the trend line is now slowly shifting toward that 50% average mark. That is again an interesting one. Exactly coinciding now with the same zone. So rather than drawing it here, I would love to pick it up. I can put it here. Again, pick it up, put it up here. They are not able to take out the head 11 o'clock. They must do by 11:09. अगर वो 11:09 तक नहीं करते तो थोड़ा कंफर्मेशन आना स्टार्ट हो जाएगा कि they might reverse. Currently the trend is now showing as a slightly bullish, but चीजें चेंज होती हुई नजर आएगी. You have hardly 3 more minutes. 2.5 minutes to be specific. Let me यहाँ पे coincide कर रहा है ये. Yeah. So how can we check the volume? We can check the volume if you go and put the volume indicator. आपको नीचे में वॉल्यूम बार दिख रहा है, वहां पे जाके आप वॉल्यूम का मूविंग एवरेज ऑन कर लीजिए. दैट इज एवरेज बार रहता है. जो आपको छोटा सा ब्लू कलर का दिख रहा है ना, दैट इज एवरेज बार. ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये दिस एन एवरेज बार. ये इसके एवरेज के ऊपर आना चाहिए प्राइस. वॉल्यूम का जो बार है ना, ये एवरेज के ऊपर आना चाहिए. यहाँ पे ग्रीन कलर का ऐसा अगर आता है, दैट मींस शोज दैट इज अ मोर ग्रेटर देन एवरेज वॉल्यूम. वी कंसिडर दैट. ओके guys, you can clearly see the price action changing suddenly. ये कैसे हो गया? Suddenly change होना start हो गया. How can that be possible? Why that is happening? You know why that is happening. Should I be excited now and suddenly go and buy the put side trade? Absolutely not. Allow the price to close below that buyer's 50% range. Allow the price to close below that trend line. Allow the price to form that big bearish candle or sort of a bearish candle that is with a good volume. And then allow the next candle to give it a confirmation ki yes, whatever you are thinking, that is in the right direction. Based upon that, we can again try to put a small quantity open on the put side with a stop loss of that previous candle high, and we can just project the new day low or price towards the day low. Until and unless that is not happening, do not even think of shorting the market. Please tell you on the gold. Gold ke liye I already told in the morning. I think you were not there in the morning session. Gold is in the selling set of ours. It is already giving us a move.
पिछले 5-7 मिनट में गोल्ड बढ़िया गिरा है, 4268 का लो लगाया है. My target is around 4250 and 4230, अराउंड दैट एरिया के आसपास में मेरा टारगेट है. And my position is currently learning I'm on profit of $14,000 as of now. ये मैंने ट्रेड आज मॉर्निंग में ही दिया था विथ ऑल दी गोल्ड बुलेट मेंबर्स. Let's see, guys. Let's see what do we get to see in the next 4-5 minutes. Guys, it's 11:11. We have surpassed that 11:09 time, and we were not able to make that high. Guys, that is the first sign which is coming from the market that they are not able to take out that move. Now in next 15, 20 or next, let's say 30 minutes, we are able to see that price is forming the exact same pattern which we have discussed for the put side move. Do not take it lightly. Okay, they can make a big spike. Okay, so I am ready here. I will start punching my order once the price starts to go above that 303. मैं एक लॉट लूंगा, उसको होल्ड करूंगा, and once I get a bigger confirmation, again I will try to, after that volume candle, I will again try to enter. Till that time, I will just be ready here. Do not be eager to short the market at this. They are still above their average price. How many of you think today's market is a tough market? मुझे तो बड़ा easy market लग रहा है आज. कितने लोग आज का market tough लग रहा है? Be genuine. Okay. Don't worry. You know why it is very difficult for you? You and me, we both are same. We both are a human being. We both are sitting in the markets. But what is the difference? That you are feeling it like a tough market and I'm feeling it like a very easy market. Is that we have the patience in us to just wait for the trade to come and then punch the order. And बहुत सारे लोग आप में से जो है उनमें वो पेशेंस ही नहीं है वेट करने का. आपके ट्रेड को आपने सेटअप के हिसाब से फॉर्म होते